नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेम पोर्टल की या जेम की जब हम बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पेपरलेस ट्रांसपेरेंट एक ऐसा माध्यम हमारे सामने आता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इससे कई लोगों को, कई इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है और गवर्नमेंट ने ये नीति भी बनाई है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वो जेम पोर्टल के थ्रू ही प्रोक्योरमेंट करें। तो किस तरीके से काम करते हैं जेम पोर्टल, ये तो हमें पता ही है। इस बारे में जेम की और सुविधाएं आज से सीएससी पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगी। क्या वो सर्विसेज रहेगी, उन सभी पे आज डिटेल पे चर्चा करने के लिए जेम टीम से हमारे साथ उनके सीईओ प्रशांत सर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। प्रशांत कुमार सिंह सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जेम टीम से ही उनके एसीओ राजेश जैन सर इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। सीएससी परिवार से सीएससी एमडी संजय राकेश कुमार सर इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। संजय सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जेम सीएससी से जो जेम सर्विसेज को देख रहे हैं उसके लिए हर्षवर्धन इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। हर्ष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और आपका भी थैंक यू सो मच। जो जेम सर्विसेज को सीएससी से सपोर्ट करने के लिए इस वक्त सीएससी परिवार से नवीन शर्मा सीएससी एसपीवी वीपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। थैंक यू भगवती एंड वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो राजेश सर, आपसे सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे वीएलईज और दर्शक जानना चाहते हैं क्या प्रोजेक्ट हैं, कौन सी सर्विसेज इस वक्त आप हमारे पोर्टल से देंगे। ओवर टू यू राजेश सर। थैंक यू भगवती मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नॉर्मली शुरू में मीडिया के थ्रू ये बहुत प्रचारित किया गया था कि गवर्नमेंट इज ऑन अमेजन ऑफ गवर्नमेंट, सो इट्स मोर लाइकली ई मार्केट प्लेस, बट as of now it has evaluated and graduated to a national public procurement status. As we all are aware, it was launched somewhere around 9th of August 2016. The idea was to provide an end-to-end solution for public procurement for all government buyers, not only central government buyers, but state governments, autonomous bodies, public sector enterprises, and all these organizations. So before understanding what GEM is, probably we can have a small history check of why GEM came into existence. It was somewhere around January 2016 when 2 or 3 committees of secretaries, which were constituted for different purposes, came out with a common recommendation that there is a need for drastic changes in the way public procurement is happening in the country. While public procurement systems were existing, it was there since British era, but they were having their own legacy problems. It was realized that incremental changes in the existing process is not going to help, and we need something which is like Amazon, which can provide direct access to the buyers and to the sellers without the need of intermediaries and without the need of so many processes that are involved in public procurement process. That was the germination of the idea of a transformational change in the public procurement system in entire country. So we at that time, this task was given to DGSND, and they were asked to create a proof of concept whether something like that can work in India in public procurement ecospaces or not. And POC went so successful that it was made kind of live for the entire country. During first 6 months of our operations, we realized that there are going to be 3 core values of our operation: transparency, efficiency, and inclusivity. So all the new developments that are taking place on government e-marketplace are driven by these 3 core parameters: ensuring transparency, ensuring efficiency. Whenever there is anything new that is brought up before GEM that you enable this, we just analyze whether this is going to help us in improving transparency, whether this is going to improve efficiency, and whether this is helping in bringing in more inclusivity. We have come a long way in last 6 years. As the statistics show, more than 66,000 buyer organizations are registered on GEM. There are more than 58 lakh sellers and service providers on GEM. More than 10,000 different product categories available on GEM. More than
290 service categories available on GEM, with millions of sellers having offered their catalogs on GEM. In last financial year, we clocked milestone of doing 1 lakh crore worth of GMV, more than 1 lakh crore worth of GMV in just one financial year. And in current year, we have already crossed 1.5 lakhs and are targeting 2 lakh crore, if I can say that. So this is the scale that we have reached in just 6 years. Of course, after development of the portal, there were many hindrances which were overcome by constant engagement with the buyer ecosystem, with the seller ecosystem, and with constant support from the government, including Department of Expenditure. As on date, we are all aware that as per Rule 149 of GFR, for central government buyers, it is mandatory to buy all the items through GEM if it is available on GEM. Even for CPSEs, instructions have been issued by the government that they must ensure that all their procurements are made through GEM. In fact, Prime Minister himself has set up a target of going to 100% by the end of March. So there is a lot of enthusiasm amongst the buyers, amongst the sellers, in moving on to government e-marketplace for meeting all their procurement requirements, be it goods, be it services. For the states, we have entered into MOUs with almost all states, and all states are currently using government e-marketplace for their procurement needs of goods and services. So the ecosystem is already huge, and we have a large number of buyers and sellers already onboarded on the platform. While there are many advantages for the sellers in joining GEM, but I can briefly tell you that being a national public procurement portal, it gives easy access to the sellers to all buyers across the country without any service charges. A seller who is registered on GEM and is getting his product uploaded on GEM gets notified about every single bid which is created from any nook and corner of the country by any government buyer on GEM. So there is no need for the seller to engage into more and more efforts in marketing or efforts in identifying the business opportunities. Day in and day out, we are working towards creating the ecosystem in such a way that the sellers are able to access the market without the need for moving from their desktop. That's the basic idea. While we already have provisions of helping startups, MSMEs, emporium products, different mechanisms have been developed to help all these types of sellers. We also have the assurance of timely payment to the sellers. With GEM Sahay, we already have a provision for helping them in terms of arranging finances for executing orders which they are receiving through GEM. There are different procurement methods which are helping different buyers. While all these things are being done and are helping us in achieving the two first objectives, that is transparency and efficiency. So on seller side, on buyer side, we are ensuring that transparency is there and efficiency is there in all procurement processes. But the inclusivity, which remains the third most important pillar, was somehow getting neglected. This issue got highlighted somewhere in when a Prime Minister's office himself ordered an thermos, and the order through GEM landed to a lady who was selling thermos from Tamil Nadu or some southern states. So this thing was picked up by Honorable Prime Minister himself, and he mentioned this in his address to the nation in Man Ki Baat, that this is the kind of thing that can happen if we go ahead with the procurement process which is so efficient and so market driven that anybody can come up and sell his product on GEM. But that also brought us to the level that we now need to go to the last mile. We have to access the last mile of the resources in terms of seller as well as buyer. And this is where the engagement with the CSC and the VLEs have come to our mind. We thought of creating some training modules for all types of sellers, but we realized that it is practically impossible for GEM alone to reach out to lakhs of sellers, lakhs of buyers who are there in the rural heartland of India. And this is where we realized that Common Service Center, which already has got more than 5 lakh Common Service Center touch points across entire length and breadth of the country, we decided to have an MOU with CSC SPV
and now we have already started training the resources of CSC. The services we have, it took, while we entered into an MOU some 6 months ago, but it took us some time to develop the functionalities through which we can ensure that VLEs can work on GEM for and on behalf of a seller or for and on behalf of a buyer, and simultaneously creating the dashboards and user-friendly access features for all these resources. The key points that are being touched upon in our integration process with CSC is that the CSC touchpoints, the VLEs, are going to help buyers as well as sellers in registration and also in product and service catalog upload by the sellers and service providers. To ease the process and to make it user friendly, what has been decided amongst GEM and CSC is that GEM is going to bear all transaction charges or the cost of VLE's transaction for buyer registration as well as for seller registration and account updation. So these two charges, while these are decided in consultation with CSC, there are fixed charges, but the seller or the buyer will not be required to pay these charges to VLE. GEM will be bearing all these costs and will be paying directly to CSC. There are some value-added services like product or service catalog upload and management of the catalogs, and some other value-added services like providing packaging and logistics through CSC as well as through India Post kind of services. For those, the charges will be borne by the seller. So I'm happy that we have already created vernacular language-based training curriculum in print media as well as in digital media for CSC and India Post staff based on their requirements. We have already started conducting training sessions, and I sincerely hope that the VLEs will find it very easy to help the sellers and buyers in onboarding GEM. So that's all for now from my side. Thank you. Thank you so much, Jain sir. You rightly said a transparent medium was required, and CSC VLEs will play an important role registering both the parties, buyers and sellers. So thank you so much, sir, for offering this great opportunity to CSC. Sanjay sir, now our VLEs want to know how they can play an important role in public procurement and helping GEM registering both buyers and sellers. Over to you, Sanjay sir. Thank you. Good morning to all. सारे जितने भाई बहन और बाकी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को आज इस नए इनिशिएटिव स्टेशन के शुभकामनाएं और इसके विशेष साधुवाद जिन्होंने जेल को गांव तक पहुंचाने निर्णय लिया है, वो सरकार ने लिया है, प्रोएक्टिव ऑन दैट। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक एग्जाम्पल है कैसे चीजों को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, सब जगह फैला सकते हैं। अभी तक सरकारी प्रोक्योरमेंट जो होता वो कुछ बड़े व्यवसायी करते थे और जिसे गवर्नमेंट एजेंसी खरीदती थी, तो कई सारे झमेले थे। तो इसमें कई सारे झमेले थे, सप्लाई से लेकर करके पेमेंट तक। इसके चलते छोटे छोटे व्यवसायी इन चीजों में पड़ने से हिचकते थे, बचते थे। जेम के प्लेटफॉर्म ने ये समस्या बहुत अच्छे तरीके से दूर कर। अब देश के किसी भी कोने में का व्यवसायी, छोटा भी व्यवसायी चाहे छोटा क्राफ्टमैन हो या छोटा मैन्युफैक्चरर हो, वो भी जेम पे सरकारी एजेंसी के बिल में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके रिक्वायरमेंट को सप्लाई कर सकता है और बिना हैसल्स के सप्लाई एक्सेप्ट होने के बाद पेमेंट भी होगा। ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिस्टम जेम ने डेवलप किया है, अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इसका फायदा दूर दराज में जो हमारी जेम है उनमें से भी है मिलना चाहिए। और इसलिए हम जेम के लोगों को बधाई देते हैं कि उन्होंने सीएससी को एज ए मीडियम चुना। जेम को सीएससी को एज ए मीडियम चुना है। हमारे सीएससी के जो भाई बहन है, ये
अगर खुद कुछ बनाते हैं तो भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं, और अगर उनके गांव के आसपास का कोई भी उद्यमी कुछ ऐसी बनाता हो जिसको वो बेचना चाहता हो, उसको वो सिस्टम में ऑन बोर्ड करा सकते हैं। और जेम ने ये भी कहा है कि ऑन बोर्डिंग के लिए वो पैसे भी उनको उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ ऑन बोर्डिंग ही नहीं, ऑन बोर्डिंग के बाद उनको टेंडर बिड में भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी पैकेजिंग में हेल्प कर सकते हैं, उनको जिम पे अपना व्यवसाय करने में हेल्प करने का सारा एस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जिम उनके को ट्रेनिंग भी दे रहा है आप लोग को, और आपको बता भी रहा है। दूसरा एस्पेक्ट है जो खरीदना चाहते हैं। अब सरकारी छोटे छोटे ऑफिस है, ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, स्कूल्स है, इनको भी जो छोटी छोटी चीजें खरीदनी होती है वो भी जिम पे आकर के वो खरीद सकते हैं, और उनको ये फायदा मिलेगा कि उनको एक ट्रांसपेरेंट रेट मिलेगा। देश के किसी भी कोने में जो रेट उपलब्ध है उसका उसको पता चलेगा, और डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी, कोई झंझट नहीं हो। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है जिम ने लिया है कि अपना रीच बढ़ाने के लिए, और सीएससी के रीच के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो सीएससी के मूल मंत्र के साथ है कि हम बिजनेस करते हैं, ऐसे एफर्ट लगाते हैं जिसमें समाज का भी भला हो, देश का भला हो, और साथ में आपको इनकम भी हो। तो सारे वीएलई से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि आपके इलाके में कौन से लोग हैं जो इसमें काम को कर सकते हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट के हो या छोटे अलमीरा बना रहे हो या ऑफिस के बना रहे हो, और वो इसमें करने में इंटरेस्टेड हो। जो इंडस्ट्री क्लस्टर है, डीआईसी है, उनसे बात करें, और सबको मिलाकर करके जितने ज्यादा लोग इसमें आप ला सकते हैं उतना देश का भला होगा, सबका भला होगा, और इस देश के उद्यम और विकास को गति मिलेगी। तो हमारी शुभकामना आपके साथ है, और आपसे उम्मीद है कि जरूर आप लार्ज स्केल पे इसको ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो पे आउट्स है वो भी काफी अच्छे हैं। राजेश जी ने अभी बताया था कि जो एसेंशियल्स है उसका पेमेंट जिम करेगा, तो उसके लिए आप पैसे नहीं लेंगे, और जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज है उसके लिए जरूर आप चार्ज कर सकते हैं शिक्षा के मौके। और सीएससी की तरफ से, जिम की तरफ से इसके लिए ट्रेनिंग रिपीटेडली कुछ ट्रेनिंग हुए हैं, और भी ट्रेनिंग वो करेंगे। तो आई एम श्योर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जिम का जो ट्रस्ट है सीएससी इसको आप जरूर रिजल्ट में फलीभूत करने में सपोर्ट करेंगे। आप सबको हमारी शुभकामनाएं, और आशा है कि ये जिम और सीएससी का पार्टनरशिप कुछ अच्छा और नया करके दिखाएगा हमारे सीएससी के भाई बहन और वीएलई के कंधों पे चलते। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच संजय सर, हमारे वीएलईज को एनकरेज करने के लिए और जेम सर्विसेज को डिटेल में बताने के लिए। प्रशांत सर, एज अ सीईओ जेम, आपसे हमारे वीएलईज और बाकी दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या अपॉर्चुनिटी हमारे वीएलईज देखते हैं इसमें, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे इस वीएलई से? ओवर टू यू सर। Thank you, Bhagwati. Should I speak in English or in Hindi? In whatever language you're comfortable with, sir. Okay. So, I think it's a pan-India presence, so I think English will be more acceptable, hopefully, because states in the south and northeast would have some difficulty in understanding Hindi. First and foremost, let me compliment my heartfelt thanks to Common Service Center SPV, Sanjay Rakesh sir in particular, for joining hands with GEM in this such a large initiative that is being undertaken. We have a huge, especially I have a huge trust in the CSC mechanism because I have seen the CSC VLEs operate in my cadre. The way, the passion with which they operate, and the kind of expertise they have acquired. So when we thought of extending our coverage pan-India for cellular onboarding, the only name which came to our mind was Common Service Center. And I'm told it's almost 5.2 lakh VLEs which are spread across the length and breadth of the country, which is a very, very encouraging sign because within minutes you can reach out with any message to the entire country. The reach is so vast. So this MOU was signed sometime in May last year with the intention that we will help even the last mile seller. सबसे छोटा से छोटा seller भी जो है, he should be able to onboard onto GEM. Rajesh gave a very detailed account of what GEM is, how it was conceived, what is the purpose. But let me also underline the fact that
Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, when he became Prime Minister for the first time in 2014, one of the first things that he mentioned from the ramparts of Red Fort on 15th of August 2014 was fight against corruption. And nothing better than, looking inwards and coming onto public procurement itself, an activity which government itself is undertaking. So with that, with some deliberations, GEM was born. And I'm very happy to share with all of you today that GEM has acquired a huge proportion and it is getting actual praise from the Honorable Prime Minister that the vision that he had envisaged has now been translated into action. We have close to 60,000 government buyers, central government, state government, central public sector, state public sector, urban local bodies, cooperative societies, almost 8.5 lakh cooperative societies. We have integration with panchayats. Almost 2.5 lakh panchayats have now connected to GEM. So the reach of buyers is immense. Now, coming to sellers, we have close to about, I would say, 11.5 lakh active sellers, but close to 48 to 50 lakh sellers who have been ported to GEM through the integration with Udyam. So that is where the real challenge lies. What we feel is that, the small sellers may not be at that level of digital literacy. They may feel slightly handicapped to, upload their different documents and then even access to a computer and then access to internet and trying to upload their products and getting registered. So that was being an impediment. So we thought that we should do some hand holding. And with good intent, we have partnered with CSC. And I believe the trainings have been done. And every VLE should be by now aware of the way it is done. It is reflecting on their dashboard also. More developments are in the pipeline in the sense that we are developing a dashboard specifically for the VLE also. He can look at the dashboard and see what has happened to the action that he has taken. It will be a very, very transparent process. The only thing here I want to emphasize is that please take an extra step. It is in nation building. It is a cause of the entire nation that, everybody joins this movement of public procurement. The dream is that even if somebody is making, broom, jhadu koi bana raha hai agar, say in a village in Rajasthan, he should be able to sell it to a government department. That is the level of empowerment. That is the level of engagement that we are envisaging. So this exercise, once it is rolled out, people will start contacting you. But not only we should look at people coming on their own, we are also sharing the list of this 48 to 50 lakh people who are there all over the country with their PIN code and possibly with their mobile number and email ID also. We would expect the VLEs to do some kind of an outreach, try and contact them and call them over. Tell them that, look, these are the advantages of GEM. We will give you a separate through CSC. Sanjay sir, I will request you to just pass it on to all the CSCs, a one-page flyer on the advantages of GEM. You can post it there. You can tell them that, look, this is what you can do. Gone are the days, when you have to run after government departments for finding out about tenders, trying to locate tenders, then trying to participate and then running after payments. All those things are thankfully in a very major way, they are now thrown out of the window. Today, sitting on your system, you can see what categories you can participate in. You can upload your products. You can participate in tenders. There are cases where people have come to me that, look, sir, we have got 500 orders without any sifarish, any kind of, contact. It just comes into our mail that this tender is there. We participate and we get the order. And the payments are also happening quickly. So all those things where, people have to factor in the delay in payment, all kinds of payment to be done at different people, bribery, that is all being thrown out of the window. Gradually, it is almost close to nil. And very soon with the developments we are doing, it will be almost, I would say, nil. I will also say that with this kind of system, we are able to respond very quickly. I mean, imagine all of us have gone through this pandemic. And imagine what would have happened if the entire country had been under lockdown, people had not been working. Who would have provided these services? Who would have enabled the procurements? GEM came up in a very rapid way, in a very, very fast manner to upload all the COVID categories, onboard suppliers, onboard people supplying oxygen concentrators and cylinders. And we did fantastic business. That's apart. But the point is how quickly we are able to respond to the requirement of the government. And we could, in a way, participate in that major initiative of government in, controlling the pandemic. I'm very proud of what has been developed over the last 5 years.
And let me also tell you that this is not just the final part. Changes are happening by the day. Changes are happening as we speak. Almost 200 functionalities are in the course of deployment. Coming to the benefit part, which you should tell the seller is that once you fully onboard the product, you will have to do nothing. You will just get your tenders notification. Just go on participating in that. And for the buyers, I would say that it's a tremendous value add because the seller ecosystem is huge. The whole nation is your marketplace. People are getting supplies in Kashmir from Kerala. People are getting supplies in Mizoram from Gujarat. Now that is something, the One India, that all of us are talking about and feel very proud of. Small things like finance needs. We had done a small pilot of providing finance to the sellers based purely on the gem order. Meaning to say that in case somebody gets a gem order for say 10 lakh rupees, he does not have the money to execute the second order. So based purely on that gem order without any collateral, he can avail a loan on the portal itself through Gem Sahay. That service we are expanding in a big way in the coming months so that everybody will be able to avail that. Banks are going to join in, NBFCs are going to join in. So the credit needs will be addressed very properly. So all these advantages are available. Of course, cost saving is there, paper saving is there, time saving is there. Our tenders, if you compare to the other state government procurement portals, the success rate is very high. Only 3% get cancelled. In case of state government portals, we see cancellation of 25 to 30%. Now, everything of this has a cost. So all these advantages, you can tell the sellers that it's a trust-based platform, but based purely on transparency, efficiency, and inclusivity. And this initiative that we are launching today is based on the pillar of inclusivity. I have a very, very fond experience, very, very good experience with the CSCs. I am sure that with your support, with a little extra step at your end, we will be able to achieve this national objective. And in case of any problem, please feel free to escalate it up your chain, and we'll be responding to those queries and making life easier for everyone. So thank you so much, and thank you CSC, thank you India Post for this great initiative, the great beginning that we are making. I'm sure it will lead to the logical end. Thanks a lot. Sure, sir. Thank you, Prashant, sir. We can see how passionate you are about this project, and we are sure some of your passion will be rub off to our VLEs and will do wonders in this project. Thank you so much, sir. And with your, sir, in your duly presence, our MD sirs and CEO sir, your presence, we want to officially launch GEM services on CSC portal. Can we have the curtain raiser, please? Yes. लॉन्च करें With this, GEM services are now live on Common Service Centers portal. VLEs are getting great opportunity. Please take advantage of that. Great. Congratulations, sir. I hope we take it to the logical end very soon. We'll be sharing the reports also with each other. Yes. It's good to start today. So now to give more details about GEM services from CSC, our VLEs want to know about what are the detailed, how they can enroll themselves and buyers and sellers. For this, we do have Mr. Harshvardhan with us. Harshvardhan will going to explain how VLEs, how they really can work under this project and what is the right way to register a buyer and seller. So Harshvardhan, over to you. थैंक यू भगवती जी और उपस्थित सभी जन को मेरा नमस्कार। सो जितने VLEs हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को भी मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो जैसा सर ने आपको बताया जेम सर्विसेज के बारे में, कैसे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बायर का, सेलर का, और बहुत सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, अपने बायर्स और सेलर्स के माध्यम से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो इस चीज की जानकारी देने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं किस प्रकार से आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर से ये सर्विसेज आप दे पाएंगे। सो इसके लिए चलते हैं फिर स्क्रीन की तरफ हम लोग।
अभी हम यहाँ से देख रहे हैं किस प्रकार से बायर्स और सेलर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जेम सर्विसेज के डिजिटल सेवा पोर्टल पर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे VLEs के पास एक अच्छा खासा चांस है कि वो एक अच्छा खासा इंसेंटिव भी कमा सकते हैं जेम सर्विसेज को देते हुए अपने कॉमन सर्विस सेंटर से, जहां पर उन्हें बायर्स और सेलर्स का रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर मैं बात करूँ इंसेंटिव्स की, तो अगर आप किसी बायर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 40 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा, और अगर आप सेलर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको 80 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा इंसेंटिव है। और आप लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर से एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, देश को फायदा पहुंचा सकते हैं जेम सर्विसेज के लिए बायर्स और सेलर्स को जोड़ते हुए। अगर हम बात करें बायर्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कैसे आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर से, हमारे जो VLEs भाई बहन है वो कैसे कॉमन सर्विस सेंटर से बायर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस। हालांकि सर पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहते हैं क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप बायर का अकाउंट बनाते हैं जेम पोर्टल के लिए। तो बायर का मतलब खरीदार होता है। आप जैसे खरीदारी करते हैं तो आपके पास एक रिच लिस्टिंग होगी प्रोडक्ट्स का। आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी आप गुड्स लेना चाहते हैं, कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी खासी कैटेगरीज होती है, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अवेलेबल होंगे कि आप कंपेयर कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, और आप अपनी बाइंग फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो आप ऑनलाइन खरीदने की आपके पास कैपेसिटी बन जाती है, आपको जब और जैसे आपको रिक्वायरमेंट होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी होती है, आप इसको प्रोवाइड करके आपको खरीदना बेहद आसान हो जाता है। तो इस प्रकार के एडवांटेजेस हमारे बायर्स के लिए होते हैं जेम पोर्टल पर। जब हमारे VLEs रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका क्या स्टेजेस होंगे, कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको बायर का अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हमारे होते हैं, इसको हम बायर कहते हैं, तो आपको सबसे पहले उनका अकाउंट क्रिएशन की तरफ ले जाना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले HOD के आधार नंबर और उनका जो ऑफिशियल ईमेल ID है आप उनको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रोवाइड करने वाले हैं, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, और कुछ बेसिक ऑफिशियल डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेजेस के बारे में जानकारी देता हूं। इसके बाद आपका जो अप्रूवल की रिक्वेस्ट चली जाती है वो चली जाती है वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास में। इसके बाद एक अगला स्टेप हमारे पास में आएगा जहां पर हम अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे, जहां पर हमें ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, पेमेंट के मेथड प्रोवाइड करने होंगे, और पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देने वाले होंगे। बायर के पास एक सुविधा होती है कि वो मल्टीपल डिविजन्स को, मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो ये कुछ स्टेजेस थे जब आप क्रिएट करेंगे बायर का अकाउंट। अब कैसे करना होगा, तो हमारे VLEs भाई बहन किसी भी बाकी सर्विस की तरह, जैसे आप जानते हैं जो आप सामने देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये है हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल। किसी भी बाकी सर्विस की तरह जब भी कभी आप कोई भी सर्विस देते हैं तो आपको जाना होगा डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड पर, आप सर्च करेंगे वहां पर जेम GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आप वहां पर जेम सर्च करेंगे, और जैसा कि आइकन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं, ये आपको लेके जाता है रजिस्ट्रेशन पेज पर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्रिएट बायर अकाउंट पर। अगर आप यहाँ पर साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हमारे VLEs क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट बायर अकाउंट, यानी कि आप बायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप बायर अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं, आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सेलर अकाउंट आप अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पहले बात कर रहे हैं किस प्रकार से आप बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट बायर अकाउंट पर। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाती है जहां पर आप आपके HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट मींस आपके बायर, जहां पर आप उनका आधार नंबर और उनका मोबाइल नंबर जो उनके आधार नंबर से लिंक है, आप उन दोनों को यहाँ मेंशन करेंगे और आप उनके आधार को वेरीफाई करेंगे क्लिक करते हुए वेरीफाई आधार बटन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरीफाई आधार, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप उनके आधार को वेरीफाई करेंगे। आधार वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप यहाँ पर एंटर किया जाएगा, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी जो HOD की ऑफिशियल ईमेल आईडी है आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ से क्लिक करेंगे सेंड OTP बटन पर, यानी कि आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा जिसको आप यहाँ पर मेंशन करते हुए आप इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है उसके बाद हमारे जो बायर्स होंगे, बायर्स के लिए आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी डिजायर्ड यूजर आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आप उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाया हुआ क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट होने की तरफ चला जाता है, और यहाँ पर अब आप ऑटो लॉग्ड हो जाते हैं, यानी कि आप खुद से ही इस पेज पर आएंगे जहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा वेरीफाइंग अथॉरिटी को।
मतलब आपने बायर का अकाउंट क्रिएट करने की तरफ आपके एक स्टेप आगे जा चुके हैं और यहाँ पर अब आप वेरीफाइंग अथॉरिटी, जिसको हम बीए कहते हैं, आप यहाँ पर उनके लिए अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। एचओडी के पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। जब कंफर्मेशन ईमेल आपके पास आ जाएगा, मींस एचओडी के पास आ जाएगा, वो होगा वीए का अप्रूवल, वेरीफाइंग अथॉरिटी का अप्रूवल। जब उनके पास वो अप्रूवल आ जाता है उनकी ईमेल पर, जो कंफर्मेशन ईमेल के रूप में उनके पास चली जाती है, उसी के बाद सिर्फ आप कुछ भी अपडेट कर पाएंगे। मैं वापस से आपको बता देना चाहता हूं, आपका जो प्रोफाइल होगा, जो हमारे बायर का प्रोफाइल है, आप उसको तभी अपडेट कर पाएंगे जब आपके पास वेरीफाइंग अथॉरिटी का अप्रूवल आ जाता है कंफर्मेशन ईमेल के रूप में उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। इसके बाद आप यहां पर लॉगिन करेंगे जैम के रजिस्ट्रेशन पेज पर और आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे इस बार अपडेट बायर अकाउंट। क्योंकि बायर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब हमें उसमें कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट बायर अकाउंट पर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप आ जाते हैं एक अगली स्क्रीन पर, जहां पर आपको वेरीफाई करना होगा आपके एचओडी को, जिसमें आप उनका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उनके मोबाइल नंबर की लास्ट 4 डिजिट आप वहां पर एंटर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो ओटीपी प्राप्त होता है उनके मोबाइल नंबर पर, आप उसके माध्यम से वेरीफाई करते हुए आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप उनकी जो डिटेल्स हैं आप उनको अपडेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप अपडेट क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं यहाँ पेमेंट मेथड, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब आप इन सबको यहाँ पर अपडेट कर देंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव बटन पर। तो जैसे यहाँ पर आपने सेव बटन पे क्लिक किया, आप वहां पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता देते हैं, बायर्स के पास एक और फैसिलिटी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आप यहाँ पर सेकेंडरी यूजर्स को भी ऐड कर सकते हैं। मींस हमारे जो एचओडी है वो हमारे मल्टीपल डिविजन्स के बेसिस पर, मल्टीपल पोस्ट के बेसिस पर आप मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल अपने सेकेंडरी यूजर्स को आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी बायर की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार से कैसे हम सेलर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे आसपास हमें सेलर्स बहुत मिलेंगे। जैसे सर ने एक झाड़ू बनाने वाले एग्जांपल दिया, या इसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, कोई फर्नीचर काम करता है, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सामान को सेल करना चाहते हैं। तो किस प्रकार की से सेलर का रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में, कैसे जब आप सेलर का अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सेलर को क्या चाहिए, सेलर को चाहिए कि उसके पास उसकी मार्केट बहुत ज्यादा हो। तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है, यानी कि हमारे सेलर के पास भी सीधा एक्सेस आ जाएगा कि वो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टारगेट कर सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके अलावा बहुत छोटा सा एफर्ट और उसके लिए वन स्टॉप शॉप हो जाती है मार्केटिंग की, मीन्स वो मार्केटिंग एक अच्छे लेवल पे कर सकता है। उसके पास एक वन स्टॉप शॉप होगा जहां पर वो बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, रिवर्स ऑक्शन कर सकता है प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज का। इसके साथ साथ कोई भी नया प्रोडक्ट है उसके लिए क्या फैसिलिटी आप सजेस्ट कर सकते हैं सेलर्स के लिए, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल रहता है इस पर्टिकुलर पोर्टल पर। डायनामिक प्राइसेस आप चेंज कर सकते हैं मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर। हो सकता है कोई प्रोडक्ट दिल्ली में कुछ अलग रेट पे जाता हो, जयपुर में अलग रेट पे जाता हो, तो आपके पास डायनामिक प्राइसिंग का भी एक ऑप्शन आता है। तो ये सारी चीजें आपको फायदेमंद हो जाती हैं जब आप सेलर का अकाउंट क्रिएट करेंगे और एज ए सेलर आप चेन के साथ में जुड़ जाएंगे। क्या स्टेजेस होंगी क्रिएट करने के लिए सेलर का अकाउंट, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेलर अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, जिसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप और नाम आप प्रोवाइड करेंगे और आप वहां पर प्रीडिक्विजिट्स को पढ़ेंगे, मींस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप वहां पर पढ़ेंगे और उसके बाद में आप उनको चेक करते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्या बंद कर दिए?